So ठीक है, last we started doing was lattice energy, और उसके अंदर what we did was कि we talked about कि what was lattice energy. ये हमने brief हमने एक point पे छोड़ा था, and that was कि lattice energy is the energy released when you have 1 mole of solid ionic lattice. ठीक है, remember it's only defined for ionic lattices, solid ionic lattice, and the lattice is formed from its constituent gaseous ions. That was another point. For example, if you have NaCl, so what you're going to do is you're going to form this NaCl from its gaseous ions, which are going to be Na plus 1, Cl minus 1. So, in other words, what's happening is you had these independent sodium ions and Cl ions, they were all just roaming around, flying around, and they all attracted each other to form this lattice, a regular arrangement, and they turned into solid state. Okay, is this clear? Yes, sir. Similarly, for example, for magnesium oxide, it's going to be that there's going to be a bunch of Mg ions and O2 minus ions. These are all randomly moving around, and they would all link up. They would all link up, and they would, and what would be formed would be magnesium oxide, which is going to be where a lattice would be formed. Mg2 plus would be strongly attracted to O2 minus. O2 minus would be strongly attracted to Mg2 plus, and so on. So a solid ionic crystal lattice would be formed. Okay. This is what lattice energy is. Now the problem with lattice energy is you can't find lattice energy directly. Okay, that's one issue. Directly meaning you go to a lab, you find sodium ions and Cl ions in gaseous state, you join them up to form ionic lattice. Okay, that's impossible because in reality, sodium ions and Cl ions usually don't exist in gaseous state. Okay, you will find sodium, you will find chlorine gas, but you won't find sodium ions and Cl ions flying around. Okay, so remember, lattice energy usually cannot be found directly. It cannot be found directly, and an indirect path is used ठीक है, an indirect path is used. Basically that indirect path is the Hess law, which is also known as the Bohr-Neighbor cycle, जो अभी हम थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे. ठीक है, so we're going to talk about the Bohr-Neighbor cycle later on. अच्छा, फिलहाल right now, Sir, yes, मॉलिक्यूल्स के बिटवीन इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस होती है, राइट? तो ये जो हम लोग लैटिस पढ़ रहे हैं, इसमें एमजी ऐसे क्यों नहीं हो रहा कि एमजीओ पहले फॉर्म हो रहा है मॉलिक्यूल और फिर वो दूसरे एमजीओ को अट्रैक्ट कर रहा है? ये आयंस को क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं इस तरह से? कि एमजीओ पहले फॉर्म हो, नहीं सारे इकट्ठे ही होंगे ना, ग्रुप में क्यों होंगे? मतलब Mg2 प्लस है ना, तो वो दो O2 माइनस आयंस को, जैसे कि पहले एमजीओ मॉलिक्यूल फॉर्म हो फिर वो, अच्छा नहीं, ये की बात है, ठीक है, सही है. मतलब वो एंड रिजल्ट तो वही होगा ना, सारे जुड़े हुए वही होगा, बिल्कुल. उसके अंदर मॉलिक्यूल्स में होता था कि मॉलिक्यूल्स में एटम्स के आपस में बॉन्ड्स बड़े स्ट्रांग होते थे, जैसा वो Cl2 का मॉलिक्यूल है ना, तो उसमें इशू ये होता था कि Cl2 मॉलिक्यूल के आपस में जो बॉन्ड्स हैं दे वेरी स्ट्रांग, लेकिन वो फिर दूसरे Cl2 के मॉलिक्यूल को कोई खास अट्रैक्ट नहीं कर रहे होते. ठीक है, वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं, बीक सी. क्लियर है ये? क्लियर. तो इसलिए वो मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंट ही होते हैं, इसलिए वो इंडिपेंडेंट ही होते हैं, इसमें सारे ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, और स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं. अच्छा, सो
अच्छा, फर्स्ट थिंग, स्ट्रेंथ ऑफ लैटिस, ठीक है, वो डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ डू यू नो कि लैटिस इज स्ट्रॉन्ग। पहले तो इन दोनों को देखो, मुझे जल्दी इसको देख के बता दो कि विच वन इज द स्ट्रॉन्गर लैटिस, NaCl और MgO। MgU, और क्यों? because it's donating two electrons. ठीक है, तो उस इट हैज +2 एंड -2, तो अट्रैक्शन इज गोइंग टू बी अ लॉट स्ट्रॉन्गर। +2 एंड -2 के बीच में द अट्रैक्शन वुड बी अ लॉट स्ट्रॉन्गर, +1 और -1 के बीच में the attraction is going to be slightly weaker. So strength of lattice में कि the strength of lattice is stronger lattice indirectly means more exothermic lattice energy. ठीक है, that's okay, stronger bonds will be formed. And what two factors determine the strength of lattice? Number one is the charge of the lattice, or the charge on the ions. ठीक है, greater charge, so you're going to have stronger attraction. ठीक है, and that would lead to a stronger lattice. ठीक है, is that clear? कि अगर if you've got three substances, you've got NaCl. Now NaCl is a weak lattice. ठीक है, we all know कि it's a weak lattice. Why? Because it's हाथ में भी ना उसको रब करो ना, तो you can crush it easily. ठीक है, NaCl. MgO is a very strong lattice क्योंकि it's Mg2 plus and O2 minus, so the attraction is a lot stronger. Al2O3 is an even stronger lattice. It's Al3 plus and O2 minus, so the attraction is a lot stronger. बल्कि जो last जो two है ना, these are ceramics. ठीक है, these are referred to as ceramics. Why? Because they've got very strong lattices. ठीक है, it's a very strong lattice and with very strong bonds. So it has a high melting and boiling points. So they used to make furnace lining. Furnace lining is made out of it. Like you've got MgO and aluminum oxide bricks. That line furnaces, etc. ठीक है, ये क्लियर है सारों को? इज दिस क्लियर? साकिब क्लियर है? आवाज का क्लियर है? जी सर। अच्छा, फिर number two. Number two is one is the charge on the ions. The greater charge, you've got stronger attraction, and the other one is दूसरा क्या होगा? What would determine the strength of the lattice? What could be? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नहीं, वो तो चलो नहीं, लेकिन उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरह? पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर लें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये इसके जी ऑक्सीजन लाइक्स टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, तो वो तो उसने गेन कर लिया, दैट्स इट। तो O-2 तो वो बन चुका है। हाँ सही है, ठीक है, वो नहीं होगा। अच्छा, साके मॉलिक्यूल्स तो है ही नहीं इसमें। मुझे बताओ, स्ट्रेंथ ऑफ एनी बॉन्ड डिपेंड्स ऑन व्हाट? साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं करता? साइज ऑफ द एटम। करता है। हाँ, तो स्मॉलर एटम होगा तो आयन में भी ये होगा कि इफ यू गॉट स्मॉलर आयंस, तो दे वुड बी क्लोजर टुगेदर एंड दे वुड बी मोर टाइटली बाउंड टुगेदर। जितने करीब होंगे उतनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी। ठीक है, सो द सेकंड पॉइंट इज it's the ionic radius. ठीक है, so you've got smaller ions and they would have stronger bonds.
So they're going to have stronger bonds because they are closer together. ठीक है, bigger ions are further away. So अच्छा, इन दोनों को ना combine करके ना, what you can write this as, both of them could be combined. ठीक है, और उसको you can call it charge density. ठीक है, so इन दोनों को combine करके we can call this, अच्छा, we can call this charge density. Charge density is uh, directly proportional to charge and inversely proportional to the ionic radii. ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्गर लैटिस होगा, वीकर होगी तो वीकर लैटिस. सो यू बेसिकली द लैटिस वुड बी स्ट्रॉन्गर इफ द आयन इज स्मॉलर एंड इट हैज ग्रेटर चार्ज. ठीक है, दैट्स इट. तो इन दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड. सो यू गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन कंपैरिजंस. फॉर एग्जांपल, अच्छा, साइज ऑफ आयन का भी थोड़ा सा पता होना चाहिए कि, सो आई एम जस्ट गोइंग टू, बिकॉज आयन चार्ज तो आपको वैसे ही पता है. ठीक है, ग्रुप 1 +1, ग्रुप 2 इज +2, ग्रुप 3 इज +3 and so on. आयोनिक रेडिया के ऊपर ना थोड़ा सा कमेंट कर लेते हैं कि हाउ डज द आयोनिक रेडियस वेरीज अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप. अच्छा, डाउन द ग्रुप तो ऑब्वियसली इंक्रीज होता है. अच्छा, so it obviously increases down the group. That's one point. The second point is across the period. Remember, across the period, it looks like this. Okay, I'll do atomic radius first. So I'll do atomic radius first. Now across the period, atomic radius decreases. Okay, so you've got group 1 here. Over end tak na, you've got group 2, group 3, 4, 5, 6, 7, and 8. अच्छा, यही तक है. तो चलिए, ठीक है. अच्छा, so you've got group 7 or 17, and you've got your noble gases, which is group 18. अच्छा, ये तो क्लियर है कि across the period atomic radius, why does it decrease atomic radius? कौन बताएगा? सर क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे होते हैं तो अट्रैक्शन ज्यादा होती है. ठीक है, सेम शेल्स होते हैं. ठीक है, you've got the same shells. तो apparently तो सेम साइज होना चाहिए था, but the nuclear charge of proton increase. So your nuclear charge increases, and बस ये उसकी वजह से ना there's more attraction. ठीक है. अच्छा, but we are talking about ions. अब ions में होता है, ions भी यही ट्रेंड फॉलो करते हैं. Positive ions are kind of smaller, like group 1, 2, 3. And negative ions are bigger in size. So negative ions would be like this. So that's your positive ions, and these are your negative ions. So remember this. So for example, you've got a comparison question. KG, there is NaCl. ठीक है, lattice energy of NaCl, and you've got lattice energy of MgO. And the question is, which one is bigger and why? ठीक है, you have to write an explanation. So whose value is going to be bigger? MgO. ठीक है, MgO is going to be bigger in size. And what is the reason for that?
Because it's a charge charge density density. greater than NHK. ठीक है, एक तो charge done, ठीक है. One is it has greater charge, so there's more attraction, and also the size of the ion is smaller. So what you can say is that it has greater charge density. ठीक है, that's it. Uh, और down the group भी इसी तरह ना बड़ा obvious होगा. So that is all about lattice energy. इससे पहले हमने क्या किया था lattice energy से पहले? We did enthalpy change of neutralization and ionization, atomization. ठीक है. अच्छा, so we're done with lattice energy. One thing also that you should know is that the value, approximate value ना, for बल्कि इसको मैं वैसे तो मैं वैसे गेस करता रहता हूँ, लेकिन अच्छा कहीं पे अगर लिस्ट बनी हो आयनिक सब्सटेंसेस जस्ट अच्छा this I think ठीक है. चलो let's have a look at this. Now these are lattice energy values for different substances. Now one thing that you should know is एक और भी कोई देख लें just for reference. ठीक है. So what I wanted to tell you was कि lattice energy की values की range क्या होती है, because a lot of questions that you're going to do after this would be about calculating the value of lattice energy. तो इसलिए ना ये थोड़ा बहुत you should know or have an idea कि lattice energy की जो value होती है ना, that varies between somewhere -1000 to 4000. ठीक है, it's not exactly -1000. You saw it 600 700 भी हो सकता है. तो but this is the approximate range, and the reason I'm telling you this is okay, so that I mean there's a lot of calculation mistakes that are done, so you should know just as a double check whether your value is correct or not. If it's coming out to be positive, that indicates it's definitely wrong. It can't be positive, it's always energy released. As a secondly, if it's coming out to be -20,000, then it's obviously incorrect. If it's coming out to be -10, then that's kind of too low. That's not possible. Okay? So remember something, -600 would be acceptable, -5,000, 6,000, that's still close to this range. But usually it's somewhere between this range. Okay? Is this clear? Yes, sir. क्योंकि अभी हमने आगे जाके ना कैलकुलेट करनी है, इसलिए पता होना चाहिए कि आंसर किस रेंज में आएगा. ठीक है, just as a check. As a next that we're going to try and do is we're going to try and do ionization energy कर लेते हैं, उसकी भी जरूरत पड़ेगी. ठीक है, so अच्छा ionization energy is just a revision, quick revision. कि उसके अंदर what happened in ionization energy, उसके what would happen is that it's the energy need, first ionization energy कर लेते हैं. So it's the energy that is needed to remove 1 mole of electrons अच्छा 1 mole of electrons from 1 mole of gaseous atoms.
and to get 1 mole of gaseous plus 1 ions. ठीक है, that is what lattice energy is. And first, lattice energy कह रहा हूँ, ionization energy. And it's, for example, for Na, it's going to be you have a gaseous atom and you just remove one electron and it turns into Na plus 1 gaseous. ठीक है, याद है सारों को, क्लियर होगा? ठीक है साकिब, क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, ये मुझे कोई बता दे कि which lattice energy is this? Plus 8. Can you even name and tell me which ionization energy is this? The 8th ionization energy. ठीक है, the 8th Ionization. नहीं, 8th ionization energy है ये. ठीक है, this is the 8th ionization energy क्योंकि 7 electrons have already been removed and you're trying to remove the 8th electron. तो अच्छा, so this is the 8th ionization energy. और उसमें ये कि अच्छा, उसी तरह तो बस आपको पता होना चाहिए कौन सी ionization energy. अच्छा, similarly, can anyone tell me what this is? अच्छा, how would you define this? Second, third and fourth ionization energy. ठीक है, exactly, ये third plus fourth है. ठीक है, अच्छा, this is the third and the fourth ionization energies together. ठीक है, तो ये पता आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए. If something is going from let's say neutral Mg gas and turns into Mg2 plus gas. So always remember that this is not just the second, and it's the first plus the second. ठीक है, क्लियर है सारों को ये? जी सर. अच्छा, then you have, let's quickly talk about the factors that affect ionization energies. तो कौन-कौन से factors हैं? सर आपकी आवाज नहीं आ रही. हेलो? Yes, sir. जी sir, yes. अच्छा, ये म्यूट पे चला गया. एक सेकेंड. अच्छा, क्या-क्या what are the factors? Size of the atom. ठीक है, नंबर 1 कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करना एटम से. व्हाई इज इट डिफिकल्ट?
साइज ऑफ एटम, ठीक है. तो एटॉमिक और आयोनिक रेडियस. So these are factors for what? आयनाइजेशन एनर्जीज को जो अफेक्ट करते हैं. अच्छा. तो इट्स द एटॉमिक. अच्छा, सेकंड और कौन सा फैक्टर था? मतलब बिगर होगा एटम या आयन, तो इट वुड बी इजियर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. नंबर 2. 5 फैक्टर्स थे, 5. न्यूक्लियर चार्ज. ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. शेल, नंबर ऑफ शेल्स. ठीक है, थर्ड वाज शील्डिंग. एंड द फोर्थ वाज क्या था फोर्थ? Fourth was the net effective charge or the net charge on the ion. एंड फिफ्थ जो था वो माइनर पॉइंट था, वो ऑर्बिटल्स और सबशेल्स का था. ठीक है, दैट वाज अबाउट ऑर्बिटल्स एंड सबशेल्स. ठीक है, वी स्टडीड ऑल ऑफ देम. एटॉमिक रेडियस में था कि इनवर्सली प्रोपोर्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं, डायरेक्टली होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. Ionic radius is bigger, so ionization energy would be lesser. ठीक है, so that's inversely proportional. Nuclear charge is directly proportional. Okay, if you have more protons, then obviously ionization energy is going to be greater. And shielding was also more shells, then it would be easier to remove electrons. So inversely proportional. Net effective charge or directly proportional. और फिर ये आखिरी वाला तो खैर वो कुछ केसेस के अंदर था कि for explaining, this was only for explaining dips at group 3 and group 6. ठीक है. अच्छा, इस पे ये वैसे जल्दी से गो थ्रू करते हैं. अक्रॉस द पीरियड क्या होता है? नहीं, क्या क्या था पहले? डाउन द ग्रुप पढ़ लेते हैं. व्हाट हैपेंड टू आयनाइजेशन एनर्जी? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप. इसलिए पढ़े कि अभी इसमें इट मैटर्स क्योंकि वैल्यूज निकालनी होंगी. क्या होगा डाउन द ग्रुप? इज इट बिकमिंग इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स और डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स? इजियर, शील्डिंग की वजह से. ठीक है, दो फैक्टर्स थे. ठीक है, इट बिकम्स आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस. और एटॉमिक ठीक है, रेडियस भी बढ़ता है. ठीक है, एज एटॉमिक रेडियस एंड शील्डिंग इंक्रीज. वन फैक्टर अपोज करता है इसे, वो कौन सा? न्यूक्लियर चार्ज. ठीक है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है बिकॉज इट इंक्रीजेस. यू हैव बिगर एटम्स, यू हैव मोर प्रोटॉन्स. ठीक है, सो बट सिंस द इलेक्ट्रॉन इज गोइंग फर्दर अवे एंड शील्डिंग इंक्रीजेस, so despite the fact that protons are increasing, so despite the fact your क्या था, your nuclear charge increases. ठीक है, और फिर इसी तरह there was a thing called across the period, बल्कि एक हम वो कर लेते हैं successive ionization energies. Successive ionization energies के अंदर होता था कि you would keep on removing electrons from the same atom. So as an example, if you have aluminium, so what happens? दो तीन चार,
let's see there. So what would happen is that aluminium has 3 electrons in its outer shell, so it's easier to remove those 3 electrons. But then once you reach the fourth shell, then there is a jump. ठीक है, jump happens. And fourth से लेके ना ये fourth, अच्छा फिर fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, and 10th, up till the 11th. It kind of remains almost the same. And then you have another jump right at the end. ठीक है. Is this clear? ये sketches याद है? जी याद है सर. तो और इससे ना you would get an idea कि इसको थोड़ा सा, अच्छा इससे what you will get an idea of how many electrons would an atom lose. ठीक है. So this is the outer shell. वो 3 electrons easy to remove. What were the factors involved? Why was there a jump over here? क्योंकि सर शेल नंबर चेंज हो रहा था, ठीक है, नीचे शेल में आ रहे थे. ठीक, एग्जैक्टली दे लॉस्ट. अब न्यू शेल शुरू हो गया था. तो what would happen was कि there was less shielding all of a sudden, and साथ ही less distance. तो इसलिए एकदम से there was a drastic increase in ionization energies, and एक factor वो throughout change हो रहा था, वो था net effective charge या net charge on the ion. वो हर दफा इलेक्ट्रॉन रिमूव करते थे ना, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाता था. ठीक है. सो it just kept on increasing every time you removed an electron. बस इन 2 पॉइंट्स के ऊपर ना, यहाँ पे और यहाँ पे there was this drastic increase in ionization energy. ठीक है. तो ये सारा क्लियर है? जी सर. अच्छा चले, ठीक है. ये फिर ना हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टाइम. ठीक है. ये हम बेसिकली बस वो एक चीज कवर करनी है, वो हम कवर करके ना फिर आगे बॉर्न एबर साइकिल पढ़ना स्टार्ट. आपसे पूछना है सर, आपने बोला तो वो जो 2 नवंबर वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए आप पास पेपर सेशन करेंगे. हाँ हाँ वीकेंड्स पे, तो सर वो होगा? ठीक है, वो भी कर लेते हैं. ठीक है. Sir, can you please share the recording of Friday's lecture? मैं करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ आज मैं अपलोड कर लूँ. ठीक है. चलो ठीक है. ओके, अल्लाह हाफिज. चलो अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़ सर. फिज